Good morning, all. Can you hear me? Can you hear me? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, voice is clear. बहुत बढ़िया. Now we'll start. Now we'll start. This class is very important, especially from GATE Mechanical Engineering XC. XC में इसका weightage बहुत है, sir. So I have taken some very good questions. Very good means very good questions, so that all varieties are covered. Okay. Okay, चलो start करें sir. Without wasting time, shall we start? Without wasting time, shall we start? Hmm. Comments में कुछ तो बोलो. Good morning. Good morning. So, have you revised the complete psychrometry? क्या आप पूरा psychrometry revise किए? क्या आप पूरा psychrometry revise किए? Yes, yes, yes. Revise किए ना? हाँ, अनिल. कौन-कौन है एक बार अटेंडेंस लगा देना. केतन, अनिल, बस. अखिल, अखिल वैभव. ठीक है. So, देखो सर, I'll always come on time. आप देखे होंगे. I always believe in respecting each other's time. ऐसा नहीं कि कोई माहौल बनाए और पूरा भरने तक हम वेट करें, ऐसा नहीं करेंगे. बिकॉज पंक्चुअलिटी इज पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन. दैट्स इट. चलो, विल प्रोसीड सर. You know that the specific humidity is given by mass of vapor to the mass of dry air, and this is I have given the equation as 0.622 PV by P total. Today's questions I am telling you ना, एक बार बताता हूँ, सुनिए सर. In XC में 3 marks will come, 2 to 3 marks will come from this chapter. अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ, 2 to 3 marks will be from this topic. And in GATE on psychrometry, generally we get 2 marks, sir. ठीक है, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है. मैं टैबलेट तो लिया. Okay. Now the relative humidity is given by PV by PVS. This also I have given. ठीक है sir, these things we have seen. And enthalpy is given as actually speaking, देखो एक बार. If you write enthalpy of the moist air, this will be enthalpy of dry air plus enthalpy of vapor. So what we have done is, you know very well, the specific enthalpy is given by total enthalpy per unit mass. So the total enthalpy is mass into specific enthalpy. So please note down that, so capital H, this is enthalpy of moist air. This is the enthalpy of moist air, and that is equal to HA. What is HA? MA into HA plus what is HV? MV into HV. This we have seen, correct or not, sir? This we have seen in the last class. Chalo, koi baat nahi. So therefore, so the enthalpy of moist air, I'll divide both sides with mass of dry air. I divide. This will be mass of dry air. दोनों तरफ divide करना. You divide with mass of dry air. MA by MA, this will be HA plus MV by MA into HV. Excellent, sir. So this we are writing it as enthalpy of moist air expressed per kg of dry air. That is equal to HA. And this can be written as MV by MA is specific humidity into V. So this is the equation, my dear students. Is it okay? This I have given. ये बहुत important है, sir. ये बहुत important है, sir. This is very, very important. So H is equal to HA. HA can be written as CPAT plus omega times enthalpy of vapor. ऐसा भी लिख सकते हैं.
If nothing is given, if directly the enthalpy of vapor is given, you put the value there. I repeat, sir. If directly the enthalpy of vapor is given, put. अगर नहीं देता है, अगर नहीं देता है, तो generally we write this as 2500 plus Cp of vapor. Actually, precisely this is 2498, but अगर नहीं देता है तो precisely it is 2498 plus Cp of vapor into T, where Cp of vapor is 1.88. All these I had explained in my previous class. Is it okay, sir? So अगर ये नहीं देखो, if the enthalpy of vapor is not given, I repeat, sir, if HV is not given, then use this equation for HV. अगर देता है तो directly we can do it. There is no problem. Now, are you ready, sir? चलो अब हम start करेंगे. Let us start with a very simple question. Let's start with a simple question. आज बहुत अच्छे अच्छे questions है, sir. Let's see. हाँ, देखो सर, let us start with a very simple question. देखो, the specific humidity of air at a pressure of 100 kilopascal, the total pressure is 100 kilopascal, the total pressure is 100, and the specific humidity omega is 0.015 kg of vapor per kg of dry air. Omega value is given specific humidity. The partial pressure of vapor is asked. PV is how much? ठीक है सर. And it's a very simple question. कैसे सर? Omega is equal to, सब लोग कैलकुलेटर रेडी रख लेना सर. Everyone please keep calculators ready सर. वॉल्यूम बढ़ाना है तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाए? एक सेकंड में चेक करता हूँ. हेलो हेलो, चलो एडजस्ट कर लेना सर. ओके, राइट. नाउ ओमेगा इज 0.622 PV by P total. What is P total? 100 minus PV. अब देखो, so already this omega is known to me. What is omega? 0.015, and that is equal to 0.622 into PV by 100 minus PV. And one more thing, sir, as 100 is in kilopascal, ध्यान से सुनो, as 100 is in kilopascal, this PV will also be in kilopascal. Calculate करेंगे sir. तो 100 minus PV divided by PV is equal to 100 minus PV is equal to 0.622 by 0.015. So is the calculator ready, sir? 0.622 divided by 0.015. This is 41 point something आ रहा है ना. एक सेकंड. 0.622 divided by 0.015. ठीक है, तो +1 कर देना into 100. So I am getting the value of PV as 2.3547. What will be the unit? So already this 100 is in kilopascal, so this will be in kilopascal. Anyone got these answers? एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूं सर. See, I don't know why students are not coming. See, honestly आप बताइए सर, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा सर. क्योंकि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है ना, सिर्फ हवाबाजी चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए. Seriously, बस that's it. So ये question, so is the answer clear, sir? Correct है? Correct है sir? Is the first question clear, sir? Is the first question clear, sir? Clear हुआ sir? Yes. हाँ, very simple straightforward question. पहले हम, to gain some confidence, let us do some simple questions. Then we have some tough questions, sir. Tough का मतलब tough questions है sir. मतलब what I am planning is, my sincere plan in this topic is to cover every question. ठीक है सर, ये पहला हो गया सर. नेक्स्ट, डायरेक्टली ये टफ क्वेश्चन नहीं देंगे आपके लिए. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये करेंगे सर बहुत सिंपल वे में. नहीं, देर आर सम वेरी टफ क्वेश्चंस, ये कर लेंगे सर. ओके, ठीक है, विल डू दिस सर. विल डू दिस सर. एयर वाटर वेपर मिक्सचर विथ अ वॉल्यूम ऑफ 100, यहाँ पे ले लेंगे सर, so that I can use more area. So
with a volume of 100 meter cube and the pressure is 100 kilopascal and the temperature is, yaad rakhna, keep this temperature in Kelvin. What does 30, because we are applying ideal gas equation, you can apply ideal gas equation दोनों के लिए अप्लाई कर सकते सर, किन के लिए, vapor as well as dry air. So therefore whenever you use ideal gas equation temperature should be strictly in Kelvin. तो 35 degrees का मतलब क्या है सर, 35 degree centigrade, it is 273 plus 35 and that is equal to 308 Kelvin. Am I right sir? 273, yes, 308. And the relative humidity is 75%. ठीक है. Taking the saturation pressure of vapor at 35 degrees. So what is given in the problem? The saturation pressure of vapor and that is given as 5.63 kilopascal. What is the mass of vapor in the mixture? ये अच्छा question है sir. This is a very good question. Please hold on. What is asked in the question? Mass of vapor. एक बार देखो. PV is equal to MRT and T should be strictly in Kelvin. Okay. Now let us apply this equation for vapor. So what will happen? So partial pressure of vapor, volume of vapor, mass of vapor, R of vapor and temperature of vapor. ठीक है sir. Let us see the mixture. एक बार देख लेना. Here you have dry air and water vapor. And you know very well, both are in equilibrium. Therefore, the temperature of dry air is equal to temperature of vapor is equal to temperature and that is 308. Already it is known to me. ठीक है sir. And you also know that dry air is spread throughout the volume. Water vapor is spread throughout the volume. I repeat sir. Dry air पूरा volume occupy कर रहा है. Water vapor पूरा volume occupy कर रहा है. So volume of vapor is equal to volume of dry air is equal to volume of the mixture and that is given as 100 meter cube. So no problem at all. यहाँ पे थोड़ा रुक के देखना सर. He is asking mass of vapor. R of vapor is nothing but, देखो, R bar by molecular weight of vapor. So R of vapor will be equal to, R bar is 8.314. What is the molecular weight of water vapor? H2O. Hydrogen is 1, but there are two atoms. 2 into 1 is 2 plus oxygen 16. Therefore 16 plus 2 is 18. This is my RV. No problem at all, sir. So if you want the mass of vapor, it will be PV, but already देखो PV VV by RV TV. तो इसको हम लिख सकते mass of vapor PV. What is VV sir? VV को क्या लिखेंगे? V लिखेंगे by RV. What is TV sir? TV को क्या लिखेंगे? It is T. तो मेरे पास volume is known, temperature is known, RV is known, but unfortunately PV is not known. क्या कोई मुझे हेल्प कर सकते हैं as to how to find PV? इधर देखो सर. How can I find PV? Phi is given, PV is given. So you already have an equation. Phi is equal to PV by PVS. So what is the relative humidity, sir? 0.75. That is equal to PV by, and PVS is 5.63. As this is in kilopascal, this will also be in kilopascal. From this, you can easily calculate the value of PV. कितना आ रहा है सर? 5.63 into 0.75. तो 4.2225. So the partial pressure of vapor यहां से निकाल लेंगे. तो PV is equal to 4.225. That is the right answer. कोई बात नहीं सर. तो PV is known. And one more thing, you may be committing one mistake. Whenever the pressure is in kilopascal, R should be in kilojoule per kg per Kelvin. So already this is in, because this is kilojoule per kilomole Kelvin, तो ये directly kilojoule per kg per Kelvin में है, इसको disturb मत करना. So therefore, if you want the mass of vapor, what is partial pressure of vapor? Already you know 4.225 or 225 sir. कितना आ रहा है? 4.225. यहाँ पे तो जगह नहीं. तो mass of vapor is equal to PVV by RVT. Excellent, sir. So the mass of vapor is equal to PV is equal to MRT. PV is 4.225 and the volume is given as 100 and R is 8.314 by 18 and the temperature is in Kelvin and you will get this value in kilogram.
So what is the mass of vapor, sir? This 18 will go to the top. So 18 into 4.2225 into 100 by 8.314 into 308. So many kilogram. Can you give me the value of this, sir? 2.96. एक बार मैं चेक कर लेता हूं सर. Calculation part is very important, sir. We are getting this as 2.97 kilogram. Anyone got this answer, sir? एक बार चेक कर लेते हैं सर. Let me check once, sir. आ गया रे, आंसर ही नहीं है. पता ही नहीं चल रहा सर. 2 पॉइंट. क्वेश्चन नंबर क्या है सर ये? क्वेश्चन नंबर क्या है सर ये? 16. उल्टा आ रहे ना हम. अरे यार. 2.96 इज इट करेक्ट? हाँ या. कहाँ गया रे? कहाँ गया रे? एक सेकंड, आई एम चेकिंग सर. समवेयर आई सॉल्व. पता नहीं कहाँ गया. या 2.96 इज राइट. करेक्ट. इज द क्वेश्चन क्लियर सर? सबको समझ में आया सर? तो और एक बात है सर, इसको दूसरी तरीके से भी करेंगे हम. एक बार देखते हैं सर. एक बार दूसरी तरीके से करेंगे. करेक्ट. Any is there any difficulty in understanding this question, sir? Is there any problem in understanding this question? No, ना. चलो. तो एक बार बताओ सर, someone should remember. जो क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लिए वो याद रख लेना सर, नंबर. बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इन ऑर्डर. जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, जस्ट रिमेंबर द नंबर. 2.96 इज राइट सर. 2.96. तो आप बताइए, विच क्वेश्चंस डिड वी कंप्लीट? एनीवन अभी मुझे बता देना. कौन से विच क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, एक बार बताओ. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम सर, एक बार देखो. 17th हो गया. 17th हो गया. 13th. आई थिंक वी हैव टू सॉल्व 2 ना. 2 हो गए ना. 13th एंड 17th. अरे यार, याद रख लेना. समवन शुड रिमेंबर. 13th 17th. करेक्ट. राइट. आराम से, टेंशन नहीं लेने का सर. हाँ, ये पढ़ो एक बार. प्लीज रीड द क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन. हाँ, someone should remember sir. Someone should remember. Echo. Moist air undergoes, see the word carefully, adiabatic saturation process such that the relative humidity of air increases. For this process, what will happen to the dry bulb temperature and specific humidity? Wait karo sir. What is the process, sir? Adiabatic. Can you tell me adiabatic process follows which lines? Dear students, adiabatic process follows which line? एक बार बताओ sir. Adiabatic process follows which lines? I taught very clearly, sir. I taught very clearly. I taught very clearly. Adiabatic बोले तो T constant बोलता है. कौन आ रही है? मतलब आप you have not revised. Adiabatic, how can it be? 12th का भी किया सर. अभी 12th कर रहे हैं. हाँ. Anyone in the class? Already I taught adiabatic process follows which lines? हे भगवान, तो कोई रिवीजन ही नहीं है. मतलब क्या उम्मीद है सर? There is no expectation. And you know very well, if I apply steady flow energy equation, we have seen that the heat transfer is given by H1 minus H2. For adiabatic process, बहुत मुश्किल है सर आपको पढ़ाना. This I got from steady flow energy equation. For adiabatic process, and you know the heat transfer is zero. जब heat transfer zero है, तो this will be H1 minus H2
इसका मतलब H1 is equal to H2 means enthalpy is constant. So please note down that for an adiabatic process enthalpy remains constant. क्या लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है सर? क्वेश्चन तब पूछा, अब आंसर दे रहे बच्चे कोई. So adiabatic process follows constant enthalpy lines. If you do not know this also, it will be very difficult, sir. Adiabatic process follows constant enthalpy lines. Adiabatic process follows constant enthalpy lines. अब देखो, let us take psychrometric chart. And you know this is a constant enthalpy line. चलो कोई बात नहीं sir. Let me write this as 1. This is a constant enthalpy line. This has 2. Now you tell me the given process क्या बोला है? Adiabatic saturation बोला है. एक बार देखो. Should the process be, anyway it is adiabatic. It is a constant enthalpy. When it is adiabatic, it is a constant enthalpy. Now my question is the process following from 1 to 2 or 2 to 1? You tell me, is the process going from 1 to 2 or 2 to 1? Anyone? I have asked you a question. Is it following from 1 to 2 or 2 to 1? अरे यार, पता नहीं क्या मैं एक पूछ रहा हूं, आप एक आंसर दे रहे हैं. Is it from 1 to 2 or 2 to 1? Why? He clearly said adiabatic saturation बोला है. तो adiabatic means constant enthalpy. The process में देखो, अगर आप constant pressure बोलेंगे तो ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता. It may be horizontal to the right or horizontal to the left. Both constant pressure process. There is nothing wrong in that. Now देखो, अब मुझे बताओ सर, यहाँ पे the 1 to 2 is adiabatic, 2 to 1 is because the enthalpy is constant. But now what he said is saturation. This curve is saturation. This curve is saturation. So we are moving towards saturation. So therefore, this is the process, sir, adiabatic saturation. So this is the actual process according to the problem. Because he said adiabatic saturation. Adiabatic means constant enthalpy. Saturation is towards saturation. ठीक है, sir. This is the original dry bulb temperature. And this is the final dry bulb temperature. So what is happening to the temperature? So the dry bulb temperature is decreasing. The temperature is decreasing. And what is happening to the specific humidity? Omega 1 is this and omega 2 is this and omega is increasing. So can I say the dry bulb temperature is decreasing and the specific humidity is increasing? क्या मैं बोल सकता हूँ सर? सर थोड़ा कॉशियस रहो सर. पढ़ना है तो सीरियस पढ़ो, वरना मत पढ़ना सर. Please, if you are really serious, study. Otherwise, focus is very important. So, any other thing? और क्या है सर? Along this, let us write everything. The dry bulb temperature decreasing. 8 seconds, sir. The dry bulb temperature is decreasing. The omega is increasing. Enthalpy is, देखो, the same question can be asked in MSQ. And wet bulb temperature, you know very well, constant enthalpy and constant wet bulb temperature lines, they are same. So constant enthalpy and constant wet bulb temperature line. This is not only constant enthalpy but also constant wet bulb temperature line. ठीक है सर. और क्या हो रहा है सर? Relative humidity देखो. Please observe, when we are moving from saturation, अगर आप saturation की तरफ जा रहे हैं तो definitely relative humidity is increasing. मान लो here the relative humidity is 30%. Now you are moving towards saturation. Definitely this is 100, so maybe 90. So phi is increasing. So the same question can be asked in MSQ. Is it clear, my dear students? अब answer दो. Please answer to this question. Anyone? What is the answer? हाँ. The dry bulb temperature increases. गलत. Dry bulb temperature increases, galat. Dry bulb decreases, correct. Specific humidity decreases, wrong. The dry bulb temperature decreases, correct. And the specific humidity increases. Option C is correct. Correct. So we have solved question number 12. Next. अभी तो हाँ ये करो. Please read this question. Please read this question. Which among the following plots represent a line joining two states with same dew point temperature?
on the standard psychrometric chart in which the dry bulb temperature is on x-axis. The dry bulb temperature is on x-axis. The dry bulb temperature is on x-axis. The dry bulb temperature is on x-axis, and humidity ratio omega is on y-axis. Omega is on y-axis. Omega is on y-axis. Anyone? What is the answer, sir? I'll be very, very happy if you answer to this question. Anyone? So this is a vertical line. This is inclined like your constant enthalpy. And this is horizontal. And this is curved. Anyone, what is the answer? I have taught you very clearly, as long as the partial pressure of vapor remains constant, the dew point temperature remains constant. So dew point temperature lines also follow. Dew point temperature lines also follow. Bolo sirs, dew point temperature lines also follow constant PV lines. So on this axis, either you take omega or PV. 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 ये बिल्कुल सही है सर, omega और PV. So you know PV constant. देखो, I taught so clearly. एक बार देख लेना सर. देखो, this is the partial pressure of vapor. Let it be PV1, and this is the saturation temperature, and this is my dew point temperature corresponding to PV1. So let us take another PV. This is PV2, and this is cutting saturation here. So this is dPT2. So as long as PV is constant, अगर PV constant है तो my dew point is also constant. अगर PV constant है, my dew point is also constant. So constant dew point temperature lines always follow constant dew point temperature lines always follow constant PV lines. So on this, either you take omega or PV. So therefore, option D is correct. Is it okay, sir? और एक बात बताता हूं सर, एक बार देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है, पूछता है, he may be giving you some point and he will ask you, ध्यान से सुनो, ये कौन सा एयर है? Is it saturated air or unsaturated? It is unsaturated, क्योंकि ये superheated में. Saturated means on this. Everyone knows for unsaturated air, the dry bulb temperature is always greater than wet bulb temperature, and wet bulb is greater than dew point temperature. How did you get this? एक बार देख लेना सर, एक बार देख लेना. Suppose this is the point and this is my dry bulb temperature, okay, and this is constant PV, okay, this is constant PV, okay, sir, this is the dry bulb temperature, and you know this is the wet bulb temperature, ठीक है sir, and constant pressure line is cutting saturation here, so this will be my dew point temperature. All these I had explained. याद है sir? सभी को ये याद है ना sir? Okay, अब देखो. Now, how are this is omega and this is dry bulb temperature. How are constant omega lengths? Constant omega lengths. Omega constant का मतलब horizontal line, horizontal line. ठीक है sir. Okay. And how are DBT lengths? Okay. Can I say at this point the vertical line is dry bulb? क्या मैं इसको dry bulb बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल बोल सकते हैं सर. 100% बोल सकते हैं सर. कोई बात नहीं सर. देखो एक बार. Now, how can I find the wet bulb temperature? देखो, wet bulb is nothing but it is also a saturation temperature. तो कैसा रहेगा? You know very well, wet bulb temperature lines are like this. एक बार देखना, wet bulb temperature lines are like this. So जहां पे saturation कट कर रहा है, वो मेरा wet bulb temperature है सर. This is a constant wet bulb temperature line. जहां पे saturation पे कट कर रहा है, that is wet bulb. This is constant wet bulb temperature line. जहां पे saturation कर रहा है, this is the wet bulb temperature. Very good. Dry bulb से wet bulb कम है. And how to go for dew point temperature lines? एक बार देखना, dew point कैसे होगा? You know how dew point is constant PV cutting saturation, that is dew point. Constant PV. So this is omega or PV. Constant PV, देखो horizontal, and cutting saturation is here, and that will be my dew point temperature. So that will be my dew point temperature. And definitely देखो एक बार, dry bulb ज्यादा है wet bulb से. ये point समझ में आया सर सभी को? Have you understood this golden point? Say yes or no. बहुत इंपॉर्टेंट है सर. अरे यार, तो I should stop teaching, sir.
क्योंकि द पॉइंट इज यू डोंट वांट एनी क्वालिटी, मतलब आपको सिर्फ दिखावा चाहिए। चलो ठीक है, आगे वही देख लो, आप दिखावा ही देख लो। दुख तो होता है सर, सीरियसली बहुत हर्ट होता है सर, बिकॉज व्हेन अ टीचर इज स्ट्रगलिंग एंड गिविंग गुड गुड क्वेश्चंस एंड यू पीपल आर नॉट गिविंग एनी रेस्पॉन्स, इट हर्ट्स सर। चलो अब बंद ही कर दूंगा, मैं कोई पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये पढ़ो सर। व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग, व्हाई शुड आई टीच? देयर इज नो पॉइंट। मेरे पास ऑलरेडी है सर, मेरे पर्सनल बैच है, उन्हीं को पढ़ाता हूँ सर। सीरियसली मेरे पास पर्सनल बैच है, मैं उन्हीं के पढ़ाता हूँ सर। मुझे मजा नहीं आ रहा सर। देखो, कंसिडर अ प्रोसेस ऑफ सेंसिबल कूलिंग, हाँ, with 60% relative humidity at constant pressure, which of the following is true? ध्यान से सुनो, he, for sensible cooling, he is asking omega and relative humidity. He is asking about omega and relative humidity. What is the process, sir? Sensible cooling. Look at, sir. Let us take this. On this axis, it is dry bulb temperature, and on this axis, it is omega. It is sensible cooling. What is the relative humidity given, sir? What is the relative humidity given? Mitro, what is the relative humidity given? The relative humidity is given as 60%. Either देखो, this is 100% relative humidity saturation, and this is maybe let us say it is 60% relative humidity. So where will be the air, sir? Somewhere यहाँ पे है sir, somewhere on this 60%. ठीक है sir, somewhere. ठीक है. What is okay? कोई बात नहीं sir. ठीक है. देखो, let us take this as saturation curve. ठीक है सर. Now, here the relative humidity is 100%. So here the relative humidity is 60%. Okay, this is the point. ठीक है sir. Now the process is sensible cooling. And you know what is sensible cooling? It is the process of cooling the air at a constant omega. Omega. So therefore, it no change in specific humidity. Horizontal. तो इसको आप horizontal खींचो सर. So let us say I have cooled from 1 to 2. ये मेरा sensible cooling हुआ sir. This is our sensible cooling. ठीक है sir. So on this the relative humidity is मित्रों, on this the relative humidity is 60%. ठीक है sir. Here the relative humidity is 60%. कोई बात नहीं sir. Now देखो. Now please observe here. मित्रों, एक बार देखना. So now what is happening? He is asking about omega and relative humidity. You tell me, point 2 is shifting towards, ये 2 किसके तरफ जा रहा है सर? Point 2 is shifting towards saturation. So definitely if the relative humidity is 60 है, यहाँ पे it will be more than 60. क्या पता? On this it may be 80 or so, maybe 80. So definitely the relative humidity is increasing. And what is happening to omega? Omega 1 and omega 2. Omega 1 is equal to omega 2, which is constant. So therefore, phi 2 is greater than phi 1. So the relative humidity is increasing and specific humidity is constant. Is it okay, sir? The relative humidity is increasing and the specific humidity is constant. So what is the answer, sir? Both humidity and relative humidity increase. Galat. Humidity decreases continuously. No. Dry bulb temperature decreases, but the wet bulb temperature increases. अरे यार, ड्राई कहाँ गया रे क्वेश्चन? ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही है सर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, कोई बात नहीं सर. एंड व्हाट अबाउट वेट बल्ब टेम्परेचर सर? डिक्रीजिंग, बट द वेट बल्ब टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. गलत है सर. देखो एक बार, कैसा गलत है मैं बताता हूँ. ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, इट इज ऑब्वियस. एक बार देखो, दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इनिशियली and this is the dry bulb temperature finally. Dry bulb is decreasing, बिल्कुल सही है. And what about the wet bulb temperature? Let me visualize. देखो एक बार, this is the constant temperature, this is the constant temperature. देखो इसके इसके कंपैरिजन में this is wet bulb temperature 1 and this is wet bulb temperature 2. ये नीचे आ रहा है तो wet bulb is decreasing, dry bulb is also decreasing. ड्राई बल्ब भी डिक्रीज हो रहा है, वेट बल्ब भी डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज दिस इज द सैचुरेशन. मतलब ये वेट बल्ब टेम्परेचर 1 हो गया है सर, ये वेट बल्ब टेम्परेचर 2 हो गया है. द ड्राई बल्ब इज आल्सो डिक्रीजिंग, वेट बल्ब इज आल्सो डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Is it clear, my dear students? Yes.
The dry bulb is also decreasing, wet bulb is also decreasing. So 100%. So dry bulb is decreasing, but wet bulb increases. Wrong, wrong. And last but not the least, kya hai sir? The relative humidity, sorry, the humidity ratio omega remains constant. ये 100% सही है sir. Relative humidity is increasing and omega is remaining constant. Is the option clear sir? तो क्वेश्चन नंबर क्या है सर? ये 10. Yes. आराम से आप देखो, धीरे धीरे हम करो सर. Please read the question. Please read the question. I request everyone to read the question. Read the question. Two moist air streams, MAS, moist air stream 1, moist air stream 2, are mixed adiabatically. The details are given in the below. Okay, with the pressure remaining same, मतलब pressure same है, with no work interactions mixing, the enthalpy of the mixed stream is okay. इधर देखो सर, अच्छा क्वेश्चन है सर. This is stream at 1, this is stream at 2, and the resulting is stream T3. So what is given sir 1 pe? The enthalpy is 42 kilojoule per kg dry air. So let me write this as H1 is 42 kilojoule per kg of dry air. So H1 is known. And specific volume is 0.85. The specific volume is 0.85 meter cube per kg of dry air. ठीक है sir. And next, and the flow rate is 85 meter cube per minute, and the volume flow rate is 85 meter cube per minute. So these are all given at state 1. Now let's go to state 2. ध्यान से सुनो. What is state 2? State 2 पे the enthalpy is 80. Enthalpy is 80. Of course, अच्छा क्वेश्चन है सर. किलोजूल पर केजी ड्राई एयर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है एंड वॉल्यूम क्या है एक बार देखेंगे. द स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो, the small v specific volume is 0.9 meter cube per kg dry air, and the volume flow rate is meter cube दिया है तो volume flow rate is 90.990. This is 0.9 meter cube per kg dry air and this is 90 meter cube per minute. Am I right sir? एक बार देखो 0.90 meter cube per minute, right? He is asking the resultant enthalpy. How do I do this? एक बार देखना सर. How do I do this? आराम से. Already I have given one equation. If I apply steady flow energy equation, kinetic energy changes, potential energy changes are negligible, and it is adiabatic mixing, तो heat transfer नहीं होगा, mixing में कोई work नहीं मिलेगा, सिर्फ enthalpies बचेंगे. M1H1 plus M2H2 is equal to M3H3. So write the conservation of energy. जो energy अंदर आ रहा है, M1H1. So I am applying to this junction. This is entering, and this is leaving. So what will be your equation? M1H1 plus M2H2 is equal to M3H3. Am I right, sir? बिल्कुल सही है. एक सेकंड देखो. So you tell me what should be the mass at 3? Definitely. So this mass is entering. This mass is entering. So always there has to be mass conservation. There has to be energy conservation. This mass is entering. This mass is entering. This plus this should be equal to this. So therefore, M3 is equal to M1 plus M2. Am I right, sir? बोलिए सर जी. हाँ जी सर. हाँ, अब देखो हाउ टू फाइंड आउट. देखो एक बार, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम बाय मास. तो अगर आपको मास चाहिए, इट विल बी वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम. ध्यान से सुनो. वॉल्यूम कैन चेंज, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैन चेंज, बट द मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड. सो देयरफॉर अगर यहाँ का मास चाहिए, ध्यान से सुनिएगा सर, व्हाट विल बी द मास? V1, कैपिटल V1 बाय स्मॉल v1. कैपिटल V1 is 85 and small v1 is 0.85. तो कितना आ रहा है सर ये? I think you are getting this as 100. Let us check the unit. एक बार देखना. तो m is v, capital V by small v. What is capital V? Meter cube per minute by small v. What is small v? Meter cube per kg of dry air. This kg of dry air will go to the top. देखो मीटर क्यूब कट जाएगा, kg of dry air ऊपर जाएगा per minute. So this will be so many kg of dry air per minute. So याद रखना सर, इसका यूनिट
तो m1 is 100 kg of dry air per minute. यहाँ पे m2, what will be m2 sir? m2 will be equal to v2 by small v2. v2 is 90, small v2 is 0.9, तो ये होगा आपका 100. What will be the unit? It is so many kg of dry air per minute. सर आपको यूनिट समझ में आ रहा है सर? All of you, are you following? All of you, are you getting? अरे यार, क्लियर? Yes, absolutely fine. अब देखो, what will be the mass at 3? Definitely m1 plus m2. m1 is 100, m2 is 100, so mass is 100 plus 100, and that will be equal to 200 kg of dry air per minute. 200 kg of dry air per minute. Beautiful sir. अब यहाँ पे अप्लाई करो. ध्यान से सुनो सर, एक बार यूनिट. What is the enthalpy at one given kilojoule for 1 kg dry air? जो fluid enter हो रहा है, for 1 kg dry air the energy is 42, but how much dry air is entering? 100. So for 1 kg it is h1, for m1 kg it will be m1 h1. m1 is 100 into h1 is 42 plus m2 is 100 into h2. What is h2? 80. Should be equal to m1 plus m2 is already known to me. m1 plus m2 is 200 into h3. देखो, so I think we can take 100 common. So 42 plus 80 is equal to 200 into h3. Absolutely fine. So 100 ones, 100 twos. So this will be, ये कितना आ रहा है सर? 2, 122 by 2 is equal to h3. So enthalpy at 3 can be written as 61 kilojoule per kg of dry air. Anyone got this answer? 61. Question number क्या है सर ये? The question number is 9th ना? 9th is also over. अच्छा, शिव कुमार तो कंटिन्यूसली दे रहा है. 9th, very good sir. 9th थोड़ा टफ क्वेश्चंस करेंगे सर, आराम से. Is it okay? Is this okay? Right. 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13th हो गया. अब आएंगे हम 14th की तरफ सर. प्लीज रीड. एक सेकेंड, थोड़ा नीटली करेंगे. ये करो. 16th पढ़ो सर. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड 16th. उल्टा आएंगे. रीड द क्वेश्चन सर. 16th करो सर, आराम से. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. वेरी गुड का मतलब अब डर गए बच्चे, भाग जाएंगे अब. मुझे एक तो साफ दिख रहा है सर कि वन थिंग आई हैव, मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि व्हेन यू आर गिविंग अ गुड कंटेंट, कोई भी नहीं आते सर. तो आई पर्सनली फील दैट आई हैव टू स्टॉप टीचिंग नाउ टू यू पीपल. तो मैं कुछ अलग खुद का देख लूंगा सर, सीरियसली. बिकॉज ऐसा मैनेजमेंट को भी ठीक नहीं लगेगा, मुझे भी ठीक नहीं लगेगा. बट आई नो वन थिंग कि कितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, तो भी मतलब जब बच्चे नहीं आएंगे तो मैनेजमेंट सोचेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है. कोई बच्चे नहीं आ रहे, दूसरे क्लास में तो ओ इतने आ रहे हैं, तो ये क्लास में नहीं आ रहे, तो मैनेजमेंट विल सीरियसली थिंक कि ये कुछ पढ़ा रहा है नहीं. तो मुझे आई डोंट वांट दिस, बिकॉज आई नो अबाउट माय कंटेंट. सो देयरफॉर आई ये इस क्लास के बाद अब मैं कोई यूट्यूब सेशन नहीं लूंगा सर, बिकॉज मुझे ठीक नहीं लग रहा है. एंड प्लीज आप अब खुद का कुछ कर लेना, बिकॉज आई एम टोटली फेड अप सर. बिकॉज मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, लाइक व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट टर्निंग अप, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा सर. बिकॉज बिकॉज मुझे दुख क्यों हो रहा है कि फॉर अदर क्लासेस पीपल तो आ रहे हैं, बच्चे तो आ रहे हैं, मगर कैसे आ रहे हैं आई डोंट नो सर. टू बी ऑनेस्ट, कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन बच्चे तो आ रहे हैं. मैं कुछ नहीं कराऊंगा सर, सीरियसली. मैं तो अब कुछ नहीं करवाऊंगा. आई एम रियली फेड अप. ठीक है, लेट मी डू. अब आज का कमिटमेंट दिए तो आज तो फुलफिल करेंगे.
बाकी का तो आई एम सीरियसली थिंकिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूट्यूब। अब यूट्यूब भी नहीं, अब पढ़ाना भी नहीं सर, मुझे मेरा स्पेशल आई वांट टू लीव सर, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा खुद का जो 30 स्टूडेंट्स का मैं पढ़ाता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं पर्सनल बैच फिजिकली आई यूज्ड टू टीच 30 स्टूडेंट्स। मैं बहुत मेरा हेल्थ भी अच्छा रहता था सर, मतलब सिर्फ 30 लोगों को पढ़ाता था, क्योंकि वो आई यूज्ड टू स्क्रूटिनाइज एंड आई यूज्ड टू सेलेक्ट, मतलब जो दिल से इंटरेस्ट शो करते हैं उन्हीं को लेता हूँ सर। कोई बात नहीं, दैट इज आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू मी। मुझे ओके ठीक है, कोई बात नहीं सर, मुझे तो टुडे आई एम टोटली हर्ट सर, टुडे आई एम टोटली 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 हर्ट। तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं सर, आप लोग अपने मर्जी से कर लेना। Moist air enters a duct at the rate of 3 kg per second. ध्यान से सुनो, this is a wonderful question. So this question will open gates for so many things. Moist air बोला है, moist air enters the duct at 3 kg per second at 10 degrees centigrade, 80% relativity. The air is heated as it flows and it exits at 30 degree. No moisture is added or removed, and the pressure of air in the duct is constant. The saturation pressure of vapor at 10 degrees is given. The enthalpy values of dry air at inlet and outlet are also given. The corresponding enthalpy values for water vapor are given. यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ सर, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। इट इज 303.2 एंड दिस इज 2556.3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर। 303.2, 2556.3, यस अब सही है सर, अब सही है सर। देखो सर, मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करूंगा बिकॉज आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। मैथ्स के लिए आपको क्या क्या किया मैं बताता हूं, एक बार देखो, आई विल शो यू। देखिए, फॉर यू पीपल मैं कितना काम कर रहा हूं सर, देखो एक आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए पूरा रेडी करके रखा, बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टीच। क्योंकि मैथ्स के लिए मैं कितना मेहनत किया सर, कितना ओनली लीनियर अलजेब्रा, इतना मतलब इतना नीटली देने के लिए मैं प्लान किया, बट व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग, मुझे अब छोड़ दो सर, कोई बात नहीं। सिंसियरली सिंसियरली मैं अपने स्टूडेंट्स को ही पढ़ाऊंगा। आई हैव सीरियसली लॉस्ट इंटरेस्ट, seriously I have lost interest। बिना वेस्ट करे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो भी मतलब पीपल आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट, ये तो हर्ट करता है सर, बिल्कुल हर्ट करता है। चलो आज का कमिटमेंट जो दिए आज फुलफिल करूंगा, और आज के क्लास के बाद आई अनाउंस की मुझे कोई आपसे अब लेना देना नहीं है। जो प्लस का भी कमिटमेंट है वो कंप्लीट करके गुड बाय बोलेंगे मुझे, क्योंकि ना इतना अच्छा क्वेश्चंस देने के बाद भी नहीं आ रहा है का मतलब आपको आपको सिर्फ कुछ फर्जी लग रहा है सर मुझे, सीरियसली समथिंग इज फिशी, कुछ तो लग रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, क्वेश्चन क्या है सर, क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एडेड। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है सर, दिस इज द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सर। और क्या बोला है सर, क्वेश्चन नंबर क्या है सर, मित्रों क्वेश्चन नंबर क्या है सर। देखो एक सेकंड, देखो मॉइस्ट एयर, कौन सा एयर है सर, मॉइस्ट एयर enters the duct at 3 kg per second, the air is heated। एक्चुअली मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं सर, अच्छा समझो इसको। देयर इज अ हीटिंग कॉइल, दिस इज हीटिंग कॉइल, ठीक है, एंड एयर इज एंटरिंग वन एंड एयर इज लिविंग। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस प्रोसेस, एक बार गेस मारो सर, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस प्रोसेस सर। मुझे लग रहा है इट इज अ सेंसिबल हीटिंग, बिकॉज क्लियरली ही सेड नो moisture is added or removed, means when moisture is neither added nor removed, vapor mass is same, तो omega will be same because dry air is always fixed। ठीक है सर, now ये मुझे सेंसिबल हीटिंग लग रहा। द एयर, देखो मॉइस्ट एयर का मास कितना है सर, 3 kg पर सेकेंड। देखो moist air mass is 3 kg per second। At what conditions it is entering, एक बार देखो, moist air at this enters at 10 degree when nothing is mentioned,
this will be dry bulb temperature. अगर कुछ भी नहीं देता है, the temperature is always dry bulb. The dry bulb is 10 degree and the relative humidity is 80%. The dry bulb temperature is 10 degrees centigrade and the relative humidity is 80%. 80% is nothing but 0.8. 80% is nothing but 0.8. Okay. The air is heated as it flows through the duct and it exits at 30 degrees centigrade. So at what temperature it is leaving, sir? It is leaving at 30 degrees centigrade. Absolutely fine. No moisture is added. Simply, it is a heater, sensible heater. So the fluid, our moist air is just absorbing heat and going. Its temperature is simply increasing. So it is the process of sensible heating. कोई बात नहीं sir. The saturation pressure of vapor at 10 degrees is 0.01228. 0.01228. So 0.1228 क्या है सर ये? This is the saturation pressure at 10 degree. एक बार देखना सर. The saturation pressure of vapor at 10 degree is 0.01228. Point कहाँ गए रे वो? 0.01228. Excellent sir. Okay. 0.012. The specific enthalpy value देखो. The specific enthalpy of dry air at inlet is and outlet. Inlet पे dry air का specific enthalpy क्या है सर? टू ड्राई एयर का इनलेट पे 283.1. so therefore enthalpy of dry air at inlet is 283.1. एक बार देख लेना सर. 283.1 kilojoule per kg of dry air. So because it is dry air. हाँ. What is the enthalpy of dry air at the exit? देखो एक बार. Clearly given. The enthalpy values of dry air at inlet and outlet is 303.2. 303.2. अच्छा क्वेश्चन है सर. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ओपन अप हो जाएंगे सर. ठीक है सर. तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो पर केजी ड्राई एयर नहीं दिया, आप क्यों लिख रहे केजी ड्राई एयर? क्लियरली ही सेड द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर. अगर ड्राई एयर रहता तो किसके रेस्पेक्ट होगा? पर केजी ड्राई एयर ही होगा. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है सर. नाउ दिस इज गिवन. और कुछ डेटा दिया सर. The corresponding enthalpy values of vapor. Water vapor का enthalpy. Water vapor का कितना है सर? 2519.8 at the inlet and the corresponding means inlet exit. Inlet पे कितना है सर? 2519.8. 2519.8. The enthalpy of vapor is 2519.8 kilojoule per kg of vapor. क्योंकि ना ये vapor का है. So what is the enthalpy of the vapor at the outlet? The enthalpy of the vapor at the outlet is 2556.3. 2556.3 of course kilojoule per kg of vapor. So आप बोलेंगे सर यहाँ पे वेपर नहीं दिया, आप ड्राई एयर नहीं दिया. देखो रे, कॉमन सेंस देखो. The enthalpy values of dry air. अगर ड्राई एयर है तो ये केजी ड्राई एयर होगा. अगर ड्राई एयर है बिकॉज दिस इज इनलेट, दिस इज आउटलेट. एंड द एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ वेपर, अगर वेपर है तो एक केजी वेपर होगा. ओके. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड? ये पूछा है सर. इज द क्वेश्चन क्लियर सर? क्या क्वेश्चन क्लियर है? आई विल एक्सप्लेन सर. मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा सर. एयर आ रहा है, मॉइस्ट एयर, मतलब इस मॉइस्ट एयर में क्या क्या रहेगा? In this moist air there will be dry air, there will be water vapor. In this moist air there will be dry air, there will be water vapor. ठीक है, दोनों मिलाकर 3 kg per second आ रहा है. उसके बाद at this temperature it is entering, at this humidity it is entering and the saturation pressure is given. and और कुछ दिया है सर, एक बार देखो. and any other data given. total pressure तो देना चाहिए. कहाँ पे दिया है? टोटल प्रेशर तो 1 बार होगा ना रे. नहीं दिया तो 1 बार लेना है. Moist air enters the duct at this and the air is heated as it flows through duct. No moisture is added or removed. दिया है, देखो. The pressure of air in the duct is constant at 1 bar. Total pressure तो 1 बार दे रखा है सर. Yes, it is given 1 bar. It is constant. So the total pressure is given. And क्या पूछा है सर? हाँ, कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? मैं बताता हूँ. Your teacher has taught very clearly the heat transfer is equal to change in enthalpy. याद है सर किसी को? Already I have given this sir. मैं आपको दिया था. And ये कहां से लाया था सर? I have derived this from steady flow energy equation.
मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से डिराइव किया था, याद है सर? डू यू रिमेंबर सर? yes, change in enthalpy. So the heat transfer is change in enthalpy. बहुत बढ़िया सर। देखो तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। अब देखो तो let me, what is this enthalpy? It is the enthalpy of moisture at the exit. What is this enthalpy? Enthalpy of moisture at the inlet. How to find out the enthalpy? इधर देखो सर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट, एक बार रिकलेक्ट कर लेना सर, जस्ट रिकलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी मैं बताया था capital H is equal to enthalpy of dry air plus enthalpy of vapor. What is the meaning of this capital H? It is the total enthalpy of vapor, of sorry, moist air. It is the total enthalpy of moist air. So you already know small h is equal to capital H by M, or h is equal to M into H. So therefore, this can be written as capital H is equal to HA. What is HA? Capital HA. It is MAHA. What is HV? It is MVHV. Excellent sir. तो अब मैं दोनों तरफ MA से डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ MA से डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ MA से, तो इसको मैं बोलूंगा स्मॉल h. Can anyone tell what is small h? It is the total enthalpy of moist air per kg of dry air. तो इसका यूनिट होगा so many kilojoule per kg of dry air. This is the total enthalpy. ये moist air का total enthalpy है, but we are expressing per kg dry air. तो ये कट जाएगा. This is HA plus mv by ma is omega, omega into hv. So if you want the enthalpy at the inlet, it will be ha plus omega hv. So h1 is ha1 plus omega, omega 1 hv1. So h2 is ha2 plus omega 2 hv2. अब देखो सर, इधर आइए. Can I calculate the value of enthalpy of one? देखो ये ड्राई एयर का सेपरेटली दिया, ये ड्राई एयर का सेपरेटली दिया, और ये वाटर वेपर का सेपरेटली दिया. मॉइस्ट एयर का क्या होना चाहिए? It will be enthalpy of dry air plus omega times HV1. Absolutely fine. So देखो H1 is equal to, what is HA1? HA1 is 283.1. एक बार यूनिट देख लेना, किलोजूल पर केजी ड्राई एयर, किलोजूल पर केजी ड्राई एयर प्लस ओमेगा 1. ओमेगा 1, ओ माय गॉड, ओमेगा 1 तो पता नहीं है. क्या आप बता सकते हैं एज टू हाउ टू कैलकुलेट ओमेगा 1? मैं ओमेगा 1 देखो एक बार, omega is equal to 0.622 PV by P total minus PV. So in order to calculate omega, P total is already known. The total pressure is 1 bar. अगर ये बार में है, ये सारे बार में रखो. So okay, I don't know the value of PV. Can anyone help me as to how to find out the value of PV? मैं PV को कैसे कैलकुलेट करूं? If PV is known, omega is known. If omega is known, HV1 is already known. Enthalpy can be found. Anyone, how to find out omega? Excellent students of India. So phi1 is equal to PV1 by PVS1. Excellent sir. यहाँ पे partial pressure is given, but that is given in bar. So यहाँ पे in this question everything is kept in bar, तो bar में ही रखो sir. So what is phi1? The relative humidity is 0.8. So 0.8 is equal to PV1 by PVS1. Already PVS1 is 0.01228. यहां से I can easily calculate the value of PV1. क्या आप मुझे PV1 का वैल्यू दे सकते हैं सर? I am waiting for your answers. I am waiting for your answers. 0.00 आ रहा है? 0.009289824. It will be in bar. Why? Because already 0.00 ये वाला बार में है. So once PV1 is known, no one will stop you in calculating omega 1. So omega 1 will be equal to 0.622. देखो omega 1 0. PV1 by P total minus P1. Keep everything in bar. What is PV1? 0.009824 PV by total pressure is 1 bar. अगर ये बार में है तो ये भी बार में होना है. The total pressure is 1 bar minus PV 0.009824. Please supply the value of omega 1. Anyone? Omega 1.
सर थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए सर। Is the value of omega 1 correct, sir? So now I have a question. If the value of omega 1 is this, what is the value of omega 2? What is the value of omega 2? It will be the same. Why? Clearly, he said no moisture is added, no moisture is removed. So omega is mv by ma. Mass of dry air is always constant, mv by ma. So vapor content can change. But in this process, neither you are adding moisture nor removing moisture. Mv is remaining constant. When mv is constant, ma is constant, simply it is heating, omega will remain constant. So in this question, omega 1, omega 2 will be same. अब हम क्या करेंगे? Let us calculate enthalpy at 1. It is the enthalpy of dry air plus omega times enthalpy of vapor. Is this correct, sir? Already you know this. एक बार देखो. Enthalpy at 1. What is HA1? HA1. HA1. 283.1. 283.1 kilojoule per kg of dry air plus omega 1. What is omega 1? 6.171 into 10 power minus 3. 6.171 into 10 power minus 3. देखो ओमेगा का यूनिट क्या है? kg vapor per kg dry air. Omega into HV1. What is HV1, sir? HV1 is HV1 2519.8. 2519.8. 2519.8 किलोजूल पर केजी ऑफ वेपर. तो ये कट जाएगा. सो यू विल गेट किलोजूल पर केजी ड्राई एयर, किलोजूल पर केजी ड्राई एयर. सो आप इसका वैल्यू दीजिए सर. प्लीज गिव मी द वैल्यू ऑफ H1. एनीवन? थोड़ा जल्दी दीजिए सर, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. मुश्किल है सर. 298. यूनिट के साथ देना जरूरी है सर. 298.65 kilojoule per kg dry air. Similarly, let us calculate H2. H2 will be equal to HA2 plus omega 2 into HV2. ठीक है sir. So therefore, H2 will be equal to, what is HA2? HA2 303.2. 303.2 plus omega 2. What is omega 2? Same as omega 1. This is 6.171 into 10 power minus 3 into HV2. What is HV2, sir? 2 double 2556.3. 2556.3. 2556.3. So please give me the value of H2. Anyone? H2 का वैल्यू कितना होगा सर? What is the heat transfer, sir? आप जानते हैं the heat transfer is given by H2 minus H1. So heat transfer is H2 is, अभी तो देखे, what is H2? 318.975. 318.975 minus H1. What is H1, sir? H1 is 298.65. 298.65. एक बार यूनिट चेक कर लेना सर. It is so many kilojoule per kg of dry air. Okay, so what is the value, sir? Where from you got this equation, sir? I have derived already from steady flow energy equation. 318.975 minus 298.65. So this will be, so Q will be equal to 20.325. So many kilojoule per kilogram of dry air. Excellent, sir. This is the equation. लेकिन options देखना एक बार. I mean, see the question properly. See, read the question properly. Read the question properly. The amount of heat added in kilowatt. We got the value in
kilojoule per kg dry air. How to proceed, sir? Whatever you have calculated now, it is for 1 kg of dry air. He is asking in kilowatt. How can I get this in kilowatt? So for 1 kg dry air, this much of heat is added. So if you find the total mass of dry air, the problem is solved. You multiply with. लेकिन mass of dry air तो पता नहीं सर. ध्यान से सुनो. एक बार देखो मित्रों, मस्त क्वेश्चन है सर. एक बार go back to the question. How much mass is entering, sir? Moist air. देखो क्वेश्चन की तरफ जाना. एक बार क्वेश्चन की तरफ जाना. Moist air at 3 kg per second. In moist air, what do we have? Moist air में क्या क्या रहेगा सर? एक बार बताइए. Moist air में क्या क्या रहेगा? मैं दोबारा बता रहा हूं सर. देखो एक सेकंड. इधर देखो सर. This is my heater. ये हमारा moist air है सर. So here the moist air is mass of dry air plus mass of vapor put together. It is the mass of moist air that is given as 3 kg per second. But I want the kg of dry air. I want the mass of dry air. मैं कैसे calculate करूं सर? आप बताइए. Anyone in the class? How to calculate, sir? Very simple, sir. Already you know omega is equal to mv by ma. So mv will be equal to omega ma. Very good, sir. तो यहाँ पे ma plus what is mv? mv is omega ma is equal to 3 kg. So हम ma को बाहर ले लेंगे तो 1 plus omega is equal to 3. Correct ना sir? So if you want ma, it will be 3 by 1 plus omega. So the mass of dry air will be equal to 3 by, already this 3 का unit है kg per second, तो 1 plus, already you know omega, 6.171 into 10 raised to minus 3. एक बार देखो 6.171 into 10 raised to minus 3. यहाँ से this will be in so many kg of dry air per second, because this is the mass of dry air. As this is in kg per second, this will also be in kg per second. Can you give me the mass of dry air, sir? 1 plus 6.171 divided by 1000, okay, into 3. तो ये आ रहा है mass of dry air is equal to 2.9816 kg dry air per second. Is the mass of dry air clear, sir? अच्छा क्वेश्चन है सर. Is the mass of dry air clear, sir? Yes. Now देखो सर, we got this. कहाँ गया? And the heat is 20.325 kilojoule per kg dry air. For 1 kg dry air, for 1 kg dry air, this much is the heat transfer. So for 2.98 कितना होगा? So total heat transfer is equal to, देखो एक बार, 2.9816. इसका यूनिट क्या है? So many kg dry air per second into 20.325. What is the unit of this? Kilojoule per kg of dry air. Kilojoule. So this is gone. So kilojoule per second is kilowatt. So what is the answer, sir? Anyone? So this is 2.98 into 20.325, and that will be 60.6 kilowatt आ रहा है सर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर. Indeed, it was a very good question. जगदीश, जगदीश मैं क्या बोलूं सर जगदीश? इन एयर कंडीशन कितना क्लैरिटी से डेरिवेशन देने के बाद भी आप यही प्रॉब्लम कर रहे हैं. कितना बुरा लगता है सर. 3 times in the same class I derived. Capital H is equal to HA plus HV. This has a unit of kilojoule. This has a unit of kilojoule. This has a unit of kilojoule. ठीक है सर. So small h is equal to capital H by M. Capital H is equal to M into small h. So capital H is equal to MA into HA. देखो HA is MHA plus HV is MV HV. Very good, sir. Now I'm dividing both sides with MA. I'm dividing both sides with MA. I'm dividing both sides with MA. Why are you dividing with MA? Because dry air part is a fixed part. In air conditioning, all calculations are based on fixed part. I had explained very clearly. So this will be, this capital H is total enthalpy. It is the total enthalpy. It has the dry air and water vapor, but that we are expressing for 1 kg dry air.
So as the total enthalpy is expressed, this is omega. So small h, this has a unit of kilojoule per kg of dry air is equal to HA plus omega HV. So what we are doing is we are calculating this H, but that is expressed for 1 kg dry air. But if you want total, whatever you have expressed is 1 kg dry air. But the moisture mass is given, total mass is given. That's why I have calculated separately dry air, because for 1 kg dry air, this much is the heat transfer or this much is the enthalpy. For total, it will be this. Is this clear? मस्त क्वेश्चन था सर. So 60.6 is correct. So question number क्या है? Question number क्या है सर? 16. Wonderful sir. Good question. Next question. 17th is already done. 16th अभी किए. 15th पढ़ो एक बार. Please read 15th. Please read 15th. Read 15th. See, is the class going on well? Have you understood? ये पढ़ो. In heating and humidification process, dry air with relative humidity of 10% and ambient temperature of 10 degree is mixed with superheated steam at T temperature. Steam is added. Okay. The resultant mixture is at 25 degrees centigrade and the relative humidity is 50%. ठीक है. The total pressure remains constant before and after the process. That is, the total pressure is 102. The saturated pressure of vapor at 10 degree and 25 degrees are given. Okay. The specific humidity in grams of water vapor per kg dry air. यहाँ पे बहुत important है. He is asking not in kg vapor. देखो kg vapor per kg dry air. He is asking in gram vapor per kg dry air. ठीक है. He has given the equation. Okay. The specific humidity in gram of vapor can be calculated by using this. The quantity of steam in grams added is per kg dry air. अच्छा क्वेश्चन है सर. मैं बताता हूँ. What is this question? Actually, यहाँ पे the steam is sprayed at T degree centigrade. Steam को देखो, steam is sprayed at this temperature. ठीक है सर. Let this be state 1 and let this be state 2. ठीक है सर. एक बार देखना. This is a steam is sprayed. देखो, actually steam को हम spray कर रहे हैं. What are the inlet conditions of air? Let's check once. देखो एक बार. In heating and humidification process, the dry air with देखो heating and humidification, dry air with relative humidity 10 and ambient temperature, relative humidity is 10, ambient temperature is 10. Means here, my dear students, देखो एक बार, the temperature is 10 degrees centigrade and the relative humidity is also 10 percentage. What does 10 percentage mean? ये 10 percentage mean का मतलब समझ में आ रहा है सर? 10% means 0.1. ठीक है सर. ओके. हाँ. Is mixed with superheated steam at temperature T. देखो, this air is coming, this moist air is coming, this air is mixed with superheated steam and the superheated steam temperature is T. दोनों mix होके resultant बाहर आ रहा है. So definitely it is what processor? Identify करो. What is this processor? एक बार बताओ सर. What is this process? Definitely, as the steam is at high temperature, the low temperature air is coming, air का temperature बढ़ेगा, so it is heating. Second point, air का temperature बढ़ेगा. Second point. Second point is what, sir? As steam is added, moisture is taken by air, so it is humidification. So it is a simultaneous heating and humidification. At what temperature the air is exiting? एक बार देखो. देखो. The resultant mixture is at 25 degrees centigrade and the relative humidity is 50%. So here the temperature is 25 degrees centigrade and the relative humidity is 50%. एक बार देख लेते हैं सर.
Yes, and the total pressure is okay. The saturated pressure of vapor at 10 degrees and 25. Saturated pressure of vapor at 10 degree is 1.2281. The saturated pressure of vapor at 10 degrees is given. The saturated pressure of vapor at 25 is also given. 10 degrees पे क्या दिया सर? At 10 degrees it is 1.2281. And what is the saturated pressure at uh, 25 given 25 degree? It is 3.1698. ठीक है, ये हो गया सर. Now देखो, ये भी हो गया सर. What is asked in the question? The question is the quantity of steam in gram पर एडेड पर केजी ऑफ ड्राई एयर. बहुत सिंपल है सर. इसको मैं कैसे ले लू सर? देखो, एयर आ रहा है, मॉइस्चर ले रहा है, हीट भी हो रहा है और बाहर जा रहा है. हाउ मच स्टीम इज एडेड? हाउ कैन आई? देखो एक बार, let me try to show it on psychrometric chart, sir. Here we have omega and here we have dry bulb temperature. So the initial temperature is 10, relative humidity is 10%. matlab somewhere here. So this is the initial. What is the temperature, sir? Let the relative humidity be 10%. यहाँ पे इस कर्व पे ये तो 100 है सर, so बीच में बहुत है, and the temperature is 10 degree centigrade, and now it is heated and humidified. So what is the relative humidity? Something like this. यहाँ पे 50% मान लीजिए, and the temperature is 25 degree. So यहाँ पे this is the process, sir. Actually ये heating and humidification. This is heating and humidification. Heating and humidification. So ये मेरा process है sir. This is the process. देखो, let me show you very clearly. Can I calculate how much steam is added? मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं सर कितना स्टीम ऐड किया गया? कुछ नहीं है सर. देखो, स्टीम इज नथिंग बट वेपर. देखो एक बार, लेट दिस बी ओमेगा 1, लेट दिस बी ओमेगा 2. तो मॉइस्चर, why the value of omega is increasing? First question is this: ओमेगा क्यों बढ़ रहा है सर? ओमेगा क्यों बढ़ रहा है? आई एम आस्किंग व्हाई ओमेगा इज इंक्रीजिंग. आई एम नॉट आस्किंग like omega 2 minus omega 1. I'm asking why the value of omega is increasing. Straight question. See, you are not answering, sir. Why? Yes, heat transfer बोलता है. कौन है रे? पता नहीं यार, कौन कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है? क्या हीट ट्रांसफर से मॉइस्चर आता है सर? अरे स्टीम को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए ओमेगा बढ़ रहा है. Omega is nothing but moisture. Why the moisture is increasing? Because it is absorbing from steam. So how much steam is added? Whatever increase, मतलब जितना omega बढ़ जाए, steam add हो. Whatever omega is increasing, that much steam is added. So steam added will be equal to omega 2 minus omega 1. ठीक है सर. Now, what will be the unit of omega? Omega is kg vapor per kg of dry air. ठीक है सर, ये हो गया. सो देखो, अब बहुत ही सिंपल है सर. मैं क्या कर रहा हूं? लेट मी कैलकुलेट ओमेगा हियर, लेट मी कैलकुलेट ओमेगा हियर. द डिफरेंस ऑफ दैट विल बी स्टीम एडेड. बट यहां से हाउ कैन आई कैलकुलेट ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट 0.622 PV by P total minus PV. Here the total pressure is given, I think somewhere it is given. कहीं पे दिया है सर? एक बार देखो. Yes, the total pressure is remaining constant at 102 kilopascal. So therefore the total pressure is 102 kilopascal. एक second रुको. Now you tell me how to calculate this omega 1. तो omega 1 calculate करने के लिए मुझे PV1 चाहिए सर. To calculate omega 1, PT is already known, it is constant at 1 or 2. And if this is in kilopascal, this will also be in kilopascal. So
To calculate omega, I need PV. How, मतलब omega 1 के लिए PV1 चाहिए. How to calculate PV1? देखो, I want PV1. Always remember, whenever relative humidity is given, phi is equal to PV by PVS. So 0.1 is equal to PV1 by PVS1, 1.2281. So PV1 will be equal to 0.1 into this. It will be point. Already kilopascal mein hai sir. Already this is in kilopascal. This will be in kilopascal. So it will be 0.12281 kilopascal. Yes, put karo. So omega 1 will be equal to 0.622 PV1. What is PV1? 0.12281, and the total pressure is 102 and 0.12281. तो कितना आ रहा है सर? ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर? ये I want the value of omega 1. 7.49, yes, 7.498 into 10 raised to minus 4 kg of vapor per kg of dry air. Omega 1 is known, but मुझे omega 2 चाहिए सर. अब ओमेगा 2 में कैसे करूंगा? सेम प्रोसेस. यहां पे phi 2 दिया, pvs 2 दिया. विद दिस इंफॉर्मेशन कैन आई कैलकुलेट pv2? तो pv2 इज इक्वल टू, देखो, अगर आपको pv चाहिए इट विल बी phi इंटू, देखो, अगर आपको pv चाहिए phi इंटू pvs, phi इंटू pvs, pv2 चाहिए phi 2 इंटू pvs2, दैट इज 1.61698. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pv2 सर? So omega 2 will be equal to 0.622 PV by P total minus PV. PV is 1.5849. P total is 102 minus 1.5849. अब आप बताइए, what is the value of omega 2? What is the value of omega 2? 1.5849. थोड़ा जल्दी बता दीजिए सर. 9.8. Yes, this is omega 2. Once omega 1, omega 2 are known, how much moisture is added? Omega 2 minus omega 1. तो ये मैं थोड़ा निकाल दूंगा सर. हाँ, तो steam added is equal to omega 2 minus omega 1. What is omega 2? 9.817 into 10 की power minus 3 minus omega 1 is 7.498 into 10 की power minus 4. The unit is so many kg of vapor per kg of dry air. बताइए सर. I think you are getting this as 9.06 into 10 power minus 3 kg of vapor per kg of dry air. So what does 10 power minus 3 kg का मतलब क्या है? So kg को 10 power 3 ग्राम लिख सकते हैं, kg को 10 power 3 ग्राम लिख सकते हैं, 10 power 3 into 10 power minus 3 को is 10, so it will be 9.06 gram of steam is added, 9.06 gram is added per kg of dry air. So answer is 9.06. Is it correct? अच्छा क्वेश्चन था सर ये. क्लियर सर? अच्छा क्वेश्चन था सर. क्वेश्चन नंबर क्या है सर? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर?
15 na? This is 15. No one is remembering. मतलब कितने के 1 2 3 4 5 6 7 8 questions we have solved. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. Now we'll go to question number 15 तो already हो गया ना. ये 14 पढ़ो सर. Please read 14th. 14th is a class question sir. क्या हुआ? 14. It's a class question sir. I'll do it. Class means मतलब this is the toughest which we can expect, toughest and lengthiest which we can expect in psychrometry. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर ये. प्लीज रीड द क्वेश्चन. सर आपने एक इक्वेशन दिया था, एंथैल्पी ऑफ वेपर इज मॉइस्चर इज सी 1.005 टी प्लस क्या बोलते हैं सीपीए टी प्लस ओमेगा इनटू 2500 प्लस 1.8 वी. अरे 2500 प्लस 1.8 वी तभी यूज करना जब एंथैल्पी ऑफ वेपर नहीं देता है. बट इन ऑल द केसेस व्हेन द एंथैल्पी ऑफ, देखो देखो एक सेकंड, द जनरल इक्वेशन दैट आई हैव टू यूज इज enthalpy of moisture per kg dry air is enthalpy of dry air plus omega times enthalpy of vapor. In most of the questions, this will be given to you. वेपर का एंथैल्पी दिया जाएगा, वेपर का. अगर ये नहीं देता है तब आपको क्या यूज करना है? 2500 प्लस 1.88 टी यूज करना है. लेकिन ये रेयरली यूज करो because most of the times enthalpy of vapor will be given. Is it okay, sir? Is it okay? So shall we take a break of 5 to 6 minutes? Then we'll start afresh. Ab bolo. Shall we take a break of 5 minutes? So your break time starts now.
हेलो, एम आई ऑडिबल मित्रों? हेलो, क्या हुआ? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस, 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 यस। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 14। 14 ना? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। पढ़ो एक बार। चलो बिफोर दैट विल डू दिस, क्योंकि डर जाके भाग जाएंगे आप। यही तो डर लगता है आपको, पढ़ाने का डर एक ही है, भाग जाने का। आई थिंक वी हैव डन दिस। ये भी हो गया ना? नाइन्थ इज ऑल्सो ओवर ना? नाइन्थ इज ऑल्सो ओवर ना? नाइन्थ इज ऑल्सो ओवर ना? करेक्ट, यस। ये करो। देर इज अ कॉमन डेटा, सेवेंथ एंड एथ विल कंप्लीट इट। सेवेंथ एंड एथ पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है सर, आई डोंट से टफ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सेवेंथ एंड एथ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस डेटा। देखो एक बार, ये वाला डेटा, this data is common for 7th and 8th. Based on this data, there is a 7th question, and after 7th question, there is 8th question. So let's take this. ठीक है सर? ओ, पूरा ही गया रे। वो अंडू नहीं कर सकते? हे भगवान, वो गया है पूरा ही। अंडू कैसे करना? हाँ, यस, यस, यस। ओ माय गॉड, मुश्किल होता था रे बाबा, रे बाबा। चलिए, आर यू रेडी मित्रों? पढ़ो एक बार। A location where the atmospheric pressure is 98 kilopascal and the ambient temperature is 30 degrees centigrade, the humidity ratio is 0.01, so many kg of vapor per kg of dry air. A high pressure front moves over the location with which changes only the atmospheric pressure to 102 bar. While the humidity, read the question properly. मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। Actually, initially the total pressure is 98 kilopascal and temperature of air is 30 degrees centigrade. ठीक है? The humidity ratio is 0.01. So over this air, a high pressure wave is pressure wave of air is traveling. So when the high pressure wave of air is coming, only the total pressure is changing, no other parameters are changing. एक बार देखो, a high pressure front moves over the location which just changes the pressure from 98 to 102. Initially the pressure was, before the high pressure front traveled, the total atmospheric pressure was 98. After the high pressure front traveled, now it is 102 kilopascal. ठीक है सर? ओमेगा is not changing, no other, देखो क्लियरली बोला है, क्लियरली बोला है, which changes only the atmospheric pressure. All other parameters are remaining same. Neither the temperature is changing nor the value of omega is changing. All other parameters are remaining same. ठीक है sir? Is it okay? Now, what is the question? देखो, what is the partial pressure of vapor in kilopascal? Okay, पहले first देखो, before the high pressure wave traveled, what is देखो, omega is equal to 0.622 PV by P total minus PV. देखो, मेरा क्वेश्चन है,
Before the high pressure front traveled, what is the total pressure? Before high pressure front traveled, the total pressure is 98. He is asking the value of PV. आराम से कर लेंगे. Is the what is the value of omega? Omega is given as 0.01. So 0.01 is equal to 0.622 PV by 98 minus PV. So what is the value of PV, sir? Anyone? Make it fast. He is asking the partial pressure of vapor before the high pressure front traveled. अरे यार, आंसर करो. हे राम, कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा. मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग सर. अच्छा 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 अच्छा. Everything is known. I'm getting this as 1.55 kilopascal. So the answer is 1.55. Anyone got this value? नहीं यार, आप लोग neither you are serious, neither you are responding, nor you are coming to class. ये सेशन कंप्लीट करके आपको मैं अब पढ़ाऊंगा ही नहीं सर. क्योंकि ना इस बार के लिए यूट्यूब सेशन के लिए मैं इतने अच्छे क्वेश्चंस 8 महीने से प्रिपेयर किया सर. बिलीव मी, 8 मंथ से नए नए क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किया. इसरो में जैसे मेरे 10 क्वेश्चंस आए थे वैसा मैं प्रिपेयर किया गेट के लिए. बट प्रणाम आप सबको, अब मैं आऊंगा ही नहीं सर. सीरियसली, सीरियसली आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट कंप्लीटली. अब मैं नो नो नो, क्योंकि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सर. ऑन यूट्यूब कुछ ना कुछ तो हो रहा है. आई डोंट नो सर, टू बी ऑनेस्ट. ये पहला होगा. 8th क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर फ्रंट? अच्छा, यहाँ पे और एक पैरामीटर दिया सर. देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिस है. द सैचुरेटेड प्रेशर at 30 degree centigrade is 4.225 kilopascal. ये मिस हुआ था सर. ये नहीं, ये मिस हुआ था सर. ये मिस हुआ था सर. 24245, सॉरी. ये 4.245 दिया था सर प्रॉब्लम में. मेरा टाइपिस्ट खा लिया उसको, कोई बात नहीं सर. So the saturated pressure of vapor at 30 degrees is 4.245. It is given sir. ये दिया है सर. देखते हैं सर हाउ टू डू. अच्छा क्वेश्चन है सर. नाउ देखो, कैसे करें सर. ही सेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. एक बार हाई प्रेशर फ्रंट ट्रैवल हुआ तो उस सिचुएशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है पूछा है सर. क्लियरली व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट? ओमेगा इज चेंजिंग सर. ओमेगा पहले भी उतना ही था, क्योंकि ओनली टोटल प्रेशर इज चेंजिंग. व्हाट, देखो एक बार सवाल तो पढ़ो. मोस्ट वर्ड which changes only the atmospheric pressure. So is the humidity ratio changing? No. So therefore, the second case में omega is also 0.01. Am I right, sir? Second case में omega is also 0.01. Second case में क्या change हो रहा है सर, आप बताओ. In second case, what is changing? You tell me. Yes, this total pressure is changing. Originally, it was 98. Now it is 102. So 0.01 is equal to 0.622 PV by P total is 102 minus PV. As this is in kilopascal, this will be in kilopascal. आप बताइए what is the value of PV?
0.6138. And he is asking relativity. It is PV by PVS. Already PVS is given 4.245, if I'm not wrong. Say, and PV is 1.6139. If you want in percentage, multiply with 100. What's the value? So this will be 38 percentage. So he is asking in percentage. So the answer is 38. So ये भी अच्छा question था sir. So 7th, 8th also we have completed. Clear? Seriously tell me, are you following? If you are following, I'll continue. If you are not following, I'll stop. बात बहुत क्लैरिटी है सर, बात बहुत सिंपल है. तो आज मुझे सीरियसली थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सबके सेशंस में बच्चे आ रहे हैं, मेरे सेशन में नहीं आ रहे हैं, मतलब मेरे में कोई कमियां हैं, तो इसीलिए मैं पढ़ाना बंद करूंगा आपको सीरियसली. दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर यू पीपल ऑन यूट्यूब. मुझे मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा सर, सॉरी. मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी. लीव इट. मुझे तो ठीक नहीं लग रहा सर. रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन. ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में गए सर. ऑप्शंस 2/7, 4/7, 2/7, 4/7. जो भी है ठीक है. अच्छे क्वेश्चन है सर. An air conditioning system consists of insulated rigid mixing chamber designed to supply air at 24 degrees centigrade to a building. The mixing chamber mixes two air streams. Cold air at 10 degrees centigrade, mass flow rate is MC. Uh, Second, a stream of fresh air at 30 degree and the mass is this. Assuming air to be an ideal gas, okay. CP is given. Neglect changes in kinetic potential changes under steady state condition. The ratio of mass flow rate of two streams, मतलब cold to MC कहाँ है रे? MA, ठीक है सर, कोई बात नहीं. One is MC cold is at 10 degree and MA is at 30 degree and the resultant is 24. ठीक है सर. मैं बताता हूँ what is actually the question. Question is a very good question. This is the mixing stream. So did he say adiabatic? एक बार देखना सर, क्या वो बोला है एडियाबैटिक मिक्सिंग बोल के कुछ बोला है? एक बार देखते हैं सर. Insulated, yes. Insulated, yes. Let this be 1, let this be 2. Air is entering, air is entering and resultant is leaving. ठीक है सर. Okay, no problem at all. Now what is the state given here? यहाँ का temperature is 10, mass flow rate is MC. Here the temperature of one is 10 degrees centigrade and the mass flow rate of one is given as MC दिया है. Here the temperature is 30 and the mass is given as MA दिया है. देने दो, फर्क क्या पड़ेगा? Okay.
10 ये 30 है सर, इज इट 30? यस, ओके। And the resultant temperature is given as 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सर, कोई बात नहीं। The resultant is 24 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है ना सर? यस, 10 डिग्री 30 डिग्री, ओके। And CP is 1.0, so what is the ratio of mass rate of MC to MA? देखो, he is asking the ratio of MC to MA। ठीक है सर, ये पूछा है MC this mass, मतलब indirectly it is M1 by M2, am I right sir? So he is asking MC by MA. MC by MA का मतलब MC is M1, MA is 2, so he is asking this value. Is it okay, sir? How do I do? Very simple, sir. Very simple. M1 H1 देखो, M1 H1 plus M2 H2, M2 H2 is equal to, yes or no, sir? Yes or no? Is equal to, the resultant is M3 H3. Is this equation clear, sir? M1 H1 plus M2 H2 is equal to M3 H3. Is it clear? Yes. अब देखो, एंड ऑलरेडी ही सेड सुपरहीटेड वेपर के लिए आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर बोला है। इधर देखो क्लियरली बोला है। देखो, assume air to be an ideal gas. For an ideal gas, I can write enthalpy as CPT. So therefore, M1, mitro, H1 can be written as CPT1 plus M2. M2, what is H2, sir? It is CP into T2. And what is H3, sir? And H3 is, you know very well, M, ये हो गया आपका M3, this is M3 and H3 is CP into T3, absolutely fine, कोई बात नहीं सर, absolutely fine. So CP 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 गया, तो M1 T1 plus मित्रों M1 T1 plus M2 T2 is equal to M3 T3, excellent sir, कोई बात नहीं सर. Now but what is M3, sir? M3 can be written as M1 plus M2. Am I right, sir? Because the mass at 3, this mass is entering, this mass is entering, this plus this is equal to this. So therefore, M1 T1 plus M2 T2 is equal to M3 is M1 plus M2 into T3. यहाँ तक सबको समझ में आया सर? I repeat, M1 T1 plus M2 T2, M3 is M1 plus M2 T3. यहाँ तक क्लैरिटी आ गया सर सभी को? So therefore, M1 T1 plus M2 T2 is equal to M1 plus M2 into T3. Excellent, sir. So we can write this as M1 T1 plus M2 T2 is equal to M1 T3 plus M2 T3. So you take all M1s on one side, सारे M1s को एक जगह ले लेना. So this can be written and सारे M2s on one side. So therefore, I'll write this as M2T2 minus M2T3. I'm taking this M2T3 to this side and इसको उधर भेज रहा हूं. तो M1T3 minus M1T1. Excellent sir. M2 को कॉमन ले लेना, T2 minus T3. M1 को कॉमन ले लेना, T3 minus T1. So अगर आपको M1 by M2 चाहिए मित्रों, M1 by M2 चाहिए, तो it will be T2 minus T3 by T3 minus T1. और यहाँ पे एक सवाल आता है, सर शुड आई टेक दिस टेम्परेचर इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस? यहाँ पे तो डायरेक्टली डिफरेंस है सर. Whenever it is difference in temperature, it doesn't actually. Whenever I write ideal gas equation, temperature should be in Kelvin. लेकिन luckily यहाँ पे difference आ रहा है सर. अगर आप केल्विन में लो या सेंटीग्रेड में लो, आपको सेम आंसर आएगा. Because finally the equation of the ratio of masses is getting reduced in terms of difference of masses. टेम्परेचर. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड. इज इट क्लियर? सो डायरेक्टली सेंटीग्रेड में रख देना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. M1 by M2 पूछा है सर. व्हाट इज T2? देखो व्हाट इज T2? T2 क्या है? 30. T3 क्या है? 24. T2 is 30 and this is 24. सर आप केल्विन में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा? कारण क्या फर्क पड़ेगा? इफ यू कन्वर्ट इन केल्विन, ये तो डिफरेंस है ना सर. इफ यू ऐड 273, यू ऐड 273, तो 273 2
नेट का कोई प्रॉब्लम हुआ सर? अभी सही है? मस्त क्वेश्चन था सर. So B is the right answer. 3/7 is correct, na? So what is this number, sir? Fourth is also over. मस्त मस्त. ये वाला ले लो. वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर क्या था सर? ये फोर्थ था ना? ये कौन सा था रे? प्लीज रीड दिस. मस्त क्वेश्चन है सर. रीड दिस. In an air conditioning system, air enters at 20 degrees centigrade and 30% relativity at a steady state of 30 meter cube per minute in a humidifier and is conditioned to 25 degrees centigrade and 60% relative humidity. ठीक है सर. Assuming the entire process to take place at a constant pressure of 100, the mass flow rate of steam added to the humidifier is. अच्छा क्वेश्चन है सर. पढ़ो एक बार. I request everyone एक बार आराम से पढ़ो सर. I'll give you time. आराम से पढ़ो. ये मई 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं और ये वाला ने फिर से एआईआर के ट्रेडिशन को प्रॉपर. Read the question. Uh, 17th to 7 ठीक है. And 14th left. बहुत बढ़िया. देखो. In an air conditioning system, air enters at 20 degrees centigrade and 30% at a steady state of 30 meter cube in a humidifier. Humidifier का मतलब moisture उसको मिल रहा है. ठीक है. क्योंकि okay, but the entire process is taking place at the constant atmospheric pressure. वो भी सही है. The mass flow rate of steam added to air, but the unit is kg per minute. ठीक है सर. देखो. That is, मान लो यहाँ पे एक ह्यूमिडिफायर है. ह्यूमिडिफायर मीन्स नथिंग बट स्प्रेइंग ऑफ वेपर. दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2. ठीक है. In an air condition, air enters at 20 degree and 30% relative humidity. 20 degrees centigrade and the relative humidity is 80%. ठीक है सर. And it is entering at 30 meter cube per minute. The volume flow rate is 30 meter cube per minute in a humidifier and is conditioned to 25 degrees and 60% relative humidity. 25 degrees centigrade. And what is the relative humidity given, sir? What is the relative humidity given? 60%. ठीक है. Now, assuming that the total pressure is 100 kilopascal, so the total pressure is remaining at 100 kilopascal.
some other data is given. Okay, sir, देखो, the mass flow rate of the steam added to the is, लेकिन he is asking the how much steam is added. So many kg of steam is added per minute. Per minute is asked. Okay, one more thing. At 20 degree and 25 degree, the saturation pressures are given. 20 degrees pe PVS is given 2.3392. 2.3392. This is the saturation pressure given at 20 degree. ठीक है sir ji. And what is the saturation pressure at 25? 3.1698. 3.1698. ठीक है. Now, how to proceed, sir? How to proceed? You tell me. You just tell me how to proceed. See, very simple. Whatever the omega value is increasing, that is nothing but steam added. देखो एक बार रेट ऑफ स्टीम एडेड सही है गलत है सर जितना भी ओमेगा बढ़ रहा है वही करना है लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन है सर कुछ यू मे बी थिंकिंग दैट सर इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन ना 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 एक सेकंड फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं पीवी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं सर phi इज इक्वल टू पीवी बाई पीवीएस अगर आपको पीवी चाहिए तो phi इंटू पीवीएस phi is 0.3 and pvs is 2.3392 तो कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ pv1 सर एनीवन pv1 का वैल्यू दीजिए थोड़ा जल्दी दीजिए सर 0.7 this information can I calculate omega 1 omega 1 can be written as 0.622 PV by P total minus PV. So omega is equal to 0.622 PV. What is PV? 0.70176 and the total pressure is 100 minus PV is 0.70176 and please give me the value of omega 1. Make it fast, make it fast. 4.3958 into 10 power minus 3 right ये हो गया सर now on similar grounds can I calculate pv2 phi 2 देखो phi 2 is pv2 by pvs2 pv2 is phi 2 into pvs2 phi 2 is 0.6 and pvs2 is 3.1698 तो आप बताइए what is the value of pv2 I want pv2 yes very good 1.90188 so many kilopascal ठीक है सर so omega 2 will be equal to 0.622 pv2 by p total minus pv2 so omega 2 is equal to 0.622 pv2 what is pv2 1.90188 by the total pressure is 100 minus 1.90188 so please provide me with omega 2 omega 2 omega 2 हे भगवंता
Okay. How much moisture is added? So moisture added will be equal to omega 2 minus omega 1. ठीक है सर, omega 2 minus 1 omega 1. तो आई नीड दिस स्पेस, तो मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा एक सेकंड इसको हटा दूंगा सर. हाँ, moisture added or the steam added will be equal to omega 2 minus omega 1. It is 0.01206. 0.01206 minus omega 1 is 4.3958 into 10 raised to minus 3. So what is the value of delta omega? Please बताइए delta omega. Sub 0.662, sorry 3 into 10 raised to minus 3. So many kg of vapor per kg of dry air. What does it mean? For 1 kg of dry air entering, these many kg of steam is added. Now I have a question, sir. But the answer is asked in moisture added minute. You have expressed the answer per kg dry air. For 1 kg dry air, this much steam is added. For 1 kg dry air entering, whatever the dry air is entering, for 1 kg dry air entering, this much vapor is added. यहां से मैं क्या करूं सर? Multiply with mass of dry air. Very good. How to find out mass of dry air? आप बताइए सर. How to find out? तो एक काम करता हूं सर, डेल्टा ओमेगा का वैल्यू रख के बाकी का सारा हटा दूंगा सर. ठीक है सर, delta omega. Now I want the value of mass of dry air. So whatever the dry air is entering, the same dry air is leaving. So there is no most maximum information is given here. So let's try to calculate the mass of dry air. अगर आप कुछ मुझे hint देंगे तो I'll be so happy sir. बोलिए सर. ऐसे करेंगे सर. I want the mass of dry air. देखो देखो देखो. PV is equal to MRT or PAVA is equal to mass of dry air RATA. And you know very well, अगर हम moisture लेते हैं तो temperature of dry air is equal to temperature of vapor is equal to T, that is dry bulk temperature. अगर हम dry air लेते हैं तो volume of dry air, देखो dry air is occupying the entire volume, vapor is occupying the entire volume, तो ये occupy करेगा. ठीक है sir, no problem. So therefore I am writing this as, my dear students, this volume of dry air is also volume, then temperature of dry air is also temperature, same. So V is ये हो गया sir. So if you want the mass of dry air, it will be PAV by MARA. If you want the mass of dry air, it will be PAV by RAT. अब यहां से कैसे करेंगे सर? यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे सर? यहाँ पे प्रॉब्लम है. देखो, आई एम कैलकुलेटिंग मास ऑफ ड्राई एयर हियर. तो क्या करेंगे? वॉल्यूम वेदर इट इज, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं. वॉल्यूम इज ऑलरेडी नोन. ठीक है. आर ए, व्हाट इज आर ए? इट इज नथिंग बट 8.314 by molecular weight of dry air is 29 and Ra is already known 0.287 kilojoule per kg per Kelvin. तो Ra का कोई प्रॉब्लम नहीं. And temperature should be strictly in Kelvin. It should be 293 Kelvin. Temperature is known, Ra is known, volume is known. To calculate the mass of dry air, Pa is not known. Partial pressure of dry air. Can you help me with partial pressure of dry air? कोई बताएगा सर? हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर नहीं है. एक्सलेंट सर. कौन बोले वो? जगदीश. वेरी गुड. द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू
partial pressure of dry air plus partial pressure of vapor. Already the total pressure is 100 kilopascal. PA I don't know, and the partial pressure all I'm putting here, and PV is 0.701. PV is 0.70. So आप मुझे PA का वैल्यू दीजिए सर. This is 99.298. So everything is known. Put here. क्या करें सर, जगह नहीं है, करेंगे कुछ ना कुछ. यहाँ पुट करो. Mass of dry air is equal to PA. PA is 99.298 and the volume is 30 by RA. RA is 0.287 and the temperature is capital T is 293. Can you guess the unit of this MA? देखो एक बार. Actually, you will get this in kg, but यहाँ पे volume is given in meter cube per minute. यहाँ पे अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है तो डायरेक्ट किलोपास्कल 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 किलोजूल पर केजी पर केल्विन टेम्परेचर केल्विन. तो ये मीटर क्यूब में है तो मास केजी में आएगा, बट दिस वॉल्यूम इज गिवन इन मीटर क्यूब पर मिनट. If this is in meter cube per minute, you will get this mass in kg per minute. So many kg of dry air. Why kg of dry air? Because we are calculating the mass of dry air. तो आप बताइए 99.298 into 30. 30 क्या है सर? Divided by 0.287 divided by 293. So I think you are getting the mass of dry air as 35.425 kg of dry air per minute. ठीक है. So now 1 kg, 1 kg, what if 1 kg dry air is entering, this much of these many kg of steam is added. For 1 kg dry air, this much steam is added because delta omega is calculated. But this much is entering. So क्या करेंगे? So total steam added will be 7.663 into 10 raised to minus 3 kg vapor per kg dry air into 35.425 kg of dry air per minute. So kg dry air, kg dry air, so many kg vapor per minute. So many kg of vapor or dry air into 7.663 divided by 1000. तो ये आ रहा है 0.271 kg of steam is added per minute. In 1 minute, 0.27 or 270 gram of steam is added for 1 minute. क्या ये आंसर समझ में आया सर? अच्छा क्वेश्चन था सर. 0.27 or 20 gram of steam is added for 1 minute. क्या ये आंसर समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था. Correct. Great. This question था सर ये. What is the question number, sir? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Question पढ़ो एक बार. Read the 5th question. ये हो गया सर. This is actually oh ठीक है. Please answer to this question, sir.
I'm waiting for your answers. I'm waiting for your answer. Atmospheric air with a dry bulb temperature of 24 degrees centigrade and relative humidity of 35% is entering a circular duct. Assuming no pressure drop in the duct, it is heated by electrical resistance inside. ठीक है? नहीं आ रहा. Atmospheric air with a dry bulb temperature of 24 and relative humidity of 35 is entering a circular duct. ठीक है? Assuming no pressure drop is heated inside the duct. The dry bulb temperature of air is measured at the outlet. नहीं समझ में आ रहा सर मेरे को क्वेश्चन. So he is heated by electrical resistance. Answer. मैं कुछ बातें करूंगा सर अबाउट माय नेक्स्ट प्लान. आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड एंड मुझे मजा भी नहीं आ रहा है. यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. मैं तो टोटली डिसअपॉइंट हो गया सर. आज तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया मैं. एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड स्ट्रेंथ फ्रॉम यू. एनीवे अब तो अब पढ़ाना ही बंद है आपको. जिनसे भी पढ़ना है उनसे पढ़ लेना. My next step, I'm totally disappointed. खाना ही बंद है आपको. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से हीट हो रहा है. तो इज देयर एनी व्हेन योर इलेक्ट्रिकल इज रेजिस्टेंस मतलब वो तो हीटिंग है. हीटिंग में तो टेम्परेचर विल इंक्रीज बट एट द सेम टाइम ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है. इज इट अ स्टीम एडिशन. देखो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. एक्चुअली एयर इज एंटरिंग. हाँ जी सर. सेट स्टेट वन. देयर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर एंड इट इज लीविंग. ठीक है सर. अब देखो यहां से क्या होगा. सिंपली एयर विल एब्सॉर्ब हीट. इज देयर एनी चेंज इन मॉइस्चर. नो. इट इज द केस ऑफ सेंसिबल हीटिंग. Read the question properly. Atmospheric air at a dry bulb temperature of 24 and humidity 35. Dry bulb temperature is 24 degrees centigrade and the relative humidity is 35%. Is it correct, sir? 35 is entering and it is there is electric heated. It is heated by electrical resistors. It's not moisture steam spray, sir. It's not steam spray. Okay. Uh, and it is exiting at 30. ठीक है सर. 30. ठीक है, no problem. Considering the flow to be steady, consider the flow to be steady. Which of the following is correct with respect to inlet air? ये तो sensible heating है सर. Sensible heating है. आप बताइए. This is one relate. Let me write all parameters. This is another parameter. आप बताइए. What is happening to the relative humidity? Dear students, what is happening to the relative humidity? It was initially it was close to the saturation. जैसे ही आप दूर दूर जा रहे हैं relativity 100%, 90%, 60%, 30%. So relative humidity is decreasing. Dry bulb temperature is increasing. Omega is constant. Is there any change of omega? No, sir. Okay, right. हाँ बोलो अब क्या होगा. There is no change in relativity. In fact, the relative humidity is decreasing. This is absolutely wrong. There is no change in dew point temperature. एक बार देखो सर. There is no change in dew point temperature. ये भी तो बात बनता है सर. हाँ बिल्कुल सही है सर.
because when it is a sensible heating, horizontal line है, तो will the dew point temperature change? Hmm. मुझे लगा था अरे यार क्या हो रहा है, पता नहीं सडनली चेंज हुआ. हाँ, will the dew point temperature change sir? आप बताइए. देखो देखो, इट इज अ देयर इज नो चेंज इन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. यस, जब हॉरिजॉन्टल है तो whether it is 2 or 1, they are on the same PV line. When PV is constant, dew point temperature will remain same. There is no change in humidity. Yes, ये भी सही है. There is no change in enthalpy. Definitely enthalpy is changing. This is one enthalpy, this is one enthalpy. Enthalpy तो बढ़ रहा है sir. Enthalpy is increasing. This is H1, this is H2. This is constant enthalpy. So it is a multiple select. So option is B and C. Unfortunately, no one has given. क्या हो रहा है सर? ये तो गलत है सर. क्या हो रहा है? I thought you are going to give the answer. I thought the answer. नहीं हो रहा सर आपको. करेक्ट. बहुत बढ़िया. अभी हम इसकी तरफ जाएंगे. सो आई वांट टू टॉक टू यू, मतलब कुछ बात करना है सर आपसे. देखो, अभी थोड़ा रोक दें. कितने क्वेश्चंस किए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस. बट अच्छे अच्छे किए. बट द प्रॉब्लम इज, मैं तो खुश नहीं हूं सर आपसे. बिकॉज आई वांट टू स्टॉप सर. नहीं, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग एनी इंटरेस्ट इन यू पीपल. सो अभी मैं कोई क्लासेस नहीं लूंगा सर. वॉट एवर कमिटमेंट आई हैव गिवन वो कंप्लीट कर देता हूँ सर. अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है सर. क्या करें सर, आगे बताओ. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? प्लीज टेल मी. बोलो. बोलो. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? अभी मैं पूरे स्टॉप कर दूं सर क्लासेस? एक्चुअली मैं अच्छा प्लान किया था सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का. सीरियसली आई प्लान, लाइक बहुत अच्छा सुनहरा सुंदर प्लान किया था सर. बट लुकिंग एट योर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर. मैं यूट्यूब का कोई एल्गोरिथम ही समझ में नहीं आ रहा सर. लेकिन प्लस में तो मेरे ज्यादा आते हैं सर. प्लस में जो पेड बच्चे है ना, वो मेरा वॉच मिनट्स तो हाईएस्ट ही होता है सर. लाइक 158 मिलियन वॉच मिनट्स होता है. बट यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या सर? कुछ कर सकते क्या यहाँ पे? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सर. मैं तो मैथ्स के लिए इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चंस और मैथ्स मैं प्लान कर रहा हूं कि पूरा थ्योरी और क्वेश्चंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, नॉट जस्ट क्वेश्चन आंसर. उससे मजा नहीं आएगा सर. वो प्लान किया था लेकिन मजा नहीं आ रहा सर. वो प्लान किया था लेकिन मजा नहीं आ रहा. See, you people are not at all serious. At least I thought psychrometric questions, at least
some 30 students will come, नहीं 15 लोग आ रहे. नहीं यार, हो क्या रहा है, देर इज समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो है सर, यूट्यूब में कुछ ना कुछ तो है. मुझे ये एल्गोरिथम ही समझ में नहीं आ रहा. आज का क्लास समझ में आया सभी को? प्लीज टेल मी, हैव यू फॉलोड टुडेस क्लास? Sure, very good. All varieties we have done, like how to calculate mass of dry air, how to calculate the partial pressure of vapor, how to calculate partial pressure of dry air, and then how to calculate relative humidity, how to calculate partial pressure of vapor, then how to calculate omega, enthalpy. All these we have seen. क्या करूं बोलो आप you suggest me. I want your inputs. आप कमेंट भी नहीं करते, मतलब क्लास जब होता है ना, खाना खा के निकल जाना, फ्रीली खाना मिल रहा है, खाना खा के जाना है, ये थोड़ी होता है. एटलीस्ट जो खाना खिलाया, अच्छा हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम था, एटलीस्ट कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं सर. अच्छा हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम था. जगदीश, मैं तो रेडी हूं सर, रैंक एंड साइकिल, ब्रिटेन साइकिल, ऑटो डीजल साइकिल के सारे क्वेश्चंस लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप लोग नहीं आते ना. चेतन, थैंक यू बेटा, क्वालिटी रिवीजन तो बिल्कुल सही चल रहा है. अब बताओ सर, लाइक इन फोर्थ ईयर आई हैव क्लियर, थैंक यू, थैंक यू. हम्म. बट सीरियसनेस कैसा करे सर? एग्जैक्टली, बेटर टू टेक स्पेशल क्लास, ये सही रहेगा सर. आई पर्सनली फील ये बहुत सही रहेगा सर. सर पता है बच्चों को बस वो चाहिए जिसमें आवाज ज्यादा. सही बोले आप. द थिंग इज, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है ना, देखो एक बार, अनफॉर्चुनेटली आपका टाइम बर्बाद हो रहा है. अब इफ दैट इज द केस, एनीवे. आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है बोलो, मैं एक बार सोच लेता हूँ. मैथ्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करूँ या छोड़ दूँ? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. Hmm. I'm waiting for your answers. No one is responding. मतलब आवाज नहीं आ रहा है. So I am planning, लोग ऐसा करेंगे हम. रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल के क्वेश्चंस लेट अस प्लान ऑन स्पेशल क्लास. रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल. वॉइस इज क्लियर. पता नहीं यार. यस, केतन ने सही बोला, फॉर सीरियस स्टूडेंट्स डेफिनेटली. ये 2-3 दिन में मैं करवाऊंगा सर ऑन स्पेशल क्लास. In these 2 to 3 days we'll complete. I think that will be fine na. Some के question serious नहीं है सर.
सर जी सॉम के क्वेश्चन सीरीज लाइए सर, इसरो पेपर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्रेसिबल फ्लो, एटीडी, या थैंक यू, या विल प्लान। तो अभी मैं सोचता हूँ सर और एक क्लास लेके देखता हूँ। अगर आप लोग सीरियस है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, इफ यू आर नॉट सीरियस आई विल स्टॉप। ठीक है, रिमेनिंग आई थिंक देर आर 3 to 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस है। आई विल शेयर द सॉल्यूशंस, अपना ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है ना, या फिर आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ओके चलो, मतलब आज का क्लास समझ में आया सर सभी को? हैव यू फॉलोड टुडेस क्लास? ठीक है, यस, ओके देन चलो बाय बाय। सो आई विल कम अप विद, एक बार मैं स्पेशल क्लास पे ले लूँ तो आई विल टेक सर, अच्छा होगा, ऑल क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो बाय बाय।